Hello guys, welcome to my channel Beginners Coding. जो हम लोग आज प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं, रोटेट एन एरे इन के पोजीशन इन साइक्लिक मैनर। तो हम लोग कोई भी एरे को कोई भी के पोजीशन रोटेट करते हैं साइक्लिक मैनर में। तो जस्ट लाइक इफ वी आर सेइंग दैट हमें के इक्वल टू 2, तो हमें 2 पोजीशन रोटेट करना है इस एरे को। 2 पोजीशन साइक्लिक ऑर्डर मीन्स दैट एरे यहाँ से देन फर्स्ट कम इनटू then first position, तो last position in this cyclic manner here this way cyclic manner 2 position rotate करना है। तो after the cyclic manner the what will be the array 50 will come at the place of 1 place and 20 50 will come at the place of 20 and 40 will come at first place and then 50 come then after 10 20 30, so this is the array rotation by 2 place output this. So how we can do that? First we can do that by using double for loop. So we are using for loop k times. So we run a for loop k times in I is equal to 0. I is less than k times. So it will run a loop हाउ मेनी टाइम्स रोटेट एरे, जितनी बार एरे को रोटेट करना है उतने बार के ये लूप चलेगा, मतलब 2 टाइम्स पूरा रोटेशन करेगा। देन हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाले इंडेक्स एरे को स्टोर कर लेंगे। एरे एरे डॉट लेंथ -1 इसको स्टोर कर लिया। देन अगेन वी रन अ लूप, तो हम लोग लूप रन करेंगे जस्ट लाइक इन आई जे इज इक्वल टू 0 जे इज नो हम लोग लास्ट पे लूप करेंगे, एक एक एरो को इंक्रीज कर देंगे ये पोजीशन को। तो जे इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1 and j is greater than 0 j minus. Now then we simply swap the array, so j 1 position back j -1. Now then loop will over. Now then store the first index of array of 0. What will be the array of 0? Last element that we store in last variable. So this will loop. Now let us take a dry run of this chip. Now first the array will be 10 20 30 10. The array will be first the array will be 10 20 30 40 and then 50. Now 2 position left. So first the value of k is equal to 2. So run a loop, I becomes 0. So I is less than k, yes 2 से less than then array will store लास्ट पे array store क्या करेगा 50, एरे 50 लास्ट इंडेक्स पे स्टोर कर लेगा। देन इसके बाद लूप रन करेगा, यहाँ लास्ट इंडेक्स के एरे से लूप रन करेगा। जे की वैल्यू क्या होगी, एरे के 0 1 2 3 4, तो एरे की फोर्थ वाली जे वैल्यू होगी। अब नाउ स्वैपिंग करेगा, स्वैप क्या करेगा, जे की वैल्यू पे जे -1 डालेगा, मतलब एरे ऑफ इंडेक्स 4 पे इंडेक्स 3 की वैल्यू ये पुश करेगा। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये लूप अंटिल 0 तक चलेगा। तो हम लोग देखेंगे कि इन द प्लेस ऑफ 50 इट विल स्टोर 40, इन द प्लेस ऑफ 40 it will store 30, in the place of 30 it will store 20 and in the place of 20 it will store 10. So now the first position will remains as this because 10 is complete. Now it will come out of the loop से बाहर आ जाएगा। Then array of 0 index is actually already a 10 is placed at this position. Now this position array of 0 is equal to become 50. So now 50 will come 10 20 30 40. This will the option for when the loop is run I is equal to 0. But जब I 1 चलेगा तो ये एक एक एरे और स्वैप होती चली जाएंगी। तो हम लोग देखेंगे क्या होगा, 30 will 40 will this place will 50, then a 1 position will goes left. Now 50 will come again here, 10 will come here, 20 will come here, 30 and 40 will store at the array of 0 is equal to 40, that the after the loop last index will be stored. So the 50 will replace with 50. Now the array will become 40 50 10 20 30. Now what will be the time complexity? The time complexity, it will take almost n times and k times this, so the big O of n into k times complexity will run. Now the space complexity will be big O of 1. Now let's optimize this time complexity as more.
तो हम लोगों ने देख लिया था एरे को ब्रूट फोर्स मेथड से कैसे रिवर्स कर सकते हैं। तो हम लोग फंक्शन बना के एरे को कैसे रिवर्स कर सकते हैं जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। तो हम लोग फंक्शन बनाते हैं एरे के रिवर्स का, फंक्शन रिवर्स, देन इस पे हम लोग पास करते हैं एरे। देन हम लोग ने रिवर्स ऑफ एरे इससे लास्ट वीडियो पे पढ़ा था। तो हम लोग 2 पॉइंटर अप्रोच यूज कर रहे हैं एरे को रिवर्स करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ने फंक्शन बनाया लेफ्ट राइट, देन इसके बाद वी नो दैट while we can run a loop of while where left is less than equal to right, then we simply swap the array. So we can simply swap the array from array of left. We can store a left into temp variable array of left. Now array of left, in the place of array of left we can put array of right. Now at array of right we can, now array of right we can put temp variable, and then we can increase the left plus plus, and we can decrease the right minus minus, right minus minus, and now close the loop. It will use the reverse array. Now let us see how could we reverse the array. So just 10, 20, 30, 40, 50. Now if somebody say that you can reverse the array k is equal to 2 times, so first we can reverse the k elements from the starting and remaining k elements, then we can reverse the whole array. So first we can reverse starting 2 elements. So when we reverse starting 2 elements, 20 and 10 will be the array, and now the array will remain same, 30, 40, 50. Then we can reverse the left elements, then 20 and 10, 30. We can reverse a remaining array 50, 40 and 30. 50, 40 and 30. Now we can reverse a whole array. So we can reverse a whole array to 30, 40, 50, 10 and 20. So you can see that we can get a array by reversing k is equal to 2 times. Now you can see that the 50 will come at index 1. You can see that 0 index, 1 index, 2 index, 3 index, 4 index. 4 plus 2, if there are 5 index, so 4 plus 2 it will be 1 position. 4 modulo 4 plus 2 modulo 5, because number of elements in array 5, so it will give 1, so it will come at index 1. तो सॉरी पे कि हमने हाफ एरे पहले रिवर्स की k times, then k times over the remaining array, then whole array we can reverse it. So now let us take how it works, how it will be work, how you think that ki how to approach this. So by creating this reverse function we can simply reverse an array with very optimized time. So reverse is, we can call a function reverse, we can pass a array in reverse function and 0 k minus 1, and now then we again reverse the remaining array k n minus 1, where n is last element of array, index of array last element, and then we can reverse the whole array. Whole array means array 0 to n minus 1. So this will give the rotate of the array, rotate array circular k times, where k is the number of an rotation it will take. So now let us I told you how this work. Now let us again show you how this will work. Now let us take 2, 3, 4, 5, 6. So now if you want to k is equal to 3 times, so what will be the output? तो हम लोग k को 3 बार रोटेट करना चाहेंगे, तो क्या आउटपुट आएगा? तो हम लोग देखते हैं, जब हम लोग 3 बार रोटेट करेंगे तो 6 will come 1 place, 2 place and 3 place. So 6 will come at position 4. So what will be the output? The output will be, so this will be the output जो हम लोग रोटेट करने के बाद चाहिए. तो हम लोग ने जो कोड लिखा है, जस्ट लाइक हम लोग ने जो कोड लिखा, now you can see that this how this will work. So I will show you the dry run of this. We are taking an array 1, 2, 3, 4,
5, 6. And now if somebody say that we can rotate a circular array by k is equal to 3 times. So first we know that reverse an array. To reverse an array, I will told you in the last video. If you don't see, then go back and see first reverse the array. Then it will completely understand to you. So reverse is equal to k array. We can put this array, a array. Then now 0, what will be the k value? K value is to come 2. Now we can run a loop reverse array. Now from array 3 to 1, 2, 3, 4, 5, 6. So what will be the length of array? Should be 5. It will be 0, 1, 2, 3, 4, 5. So length of array is equal to 6, but the last index will be 5. So we run a loop from last index, and we can again call a reverse function array is equal to 0 से last index, full array reverse. Then now you can see that here array is equal to 0 to 1. So first 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 and 6 will be the array. So first it will reverse first two elements 0, 1 and 2. Two index, it will reverse two index element. So 3, 2, 1 and remaining will be as same. द एरे रिमेनिंग विल बी सेम. अब यहाँ से वो क्या करेगा, जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे हैं उसको रिवर्स करेगा, ये वाले लूप. देन दिस लूप विल बी रन, दिस फंक्शन विल कॉल दिस, एंड नाउ हेयर 3, 2, 1 विल बी सेम, एंड देन 6, 5, 4 will be as it is. Now it will call this function. This function will finish and it will return this array. But here no return function. So now this reverse function will reverse the array, whole array. So now this will 4, 5, 6. It will reverse the whole array. 1, 2, 3. So this will be rotate array by 3 position in circular. You can check that. If you reverse a 3 position, देखो 3 first position it will come here, second position it will come here, and the last position it will come here. So it will be here. First position 2 will come here, then second position 2 will come, third position 2 will come here. First position 1 is come here, then second position, then third position will come. 6 will come first position, second position, and third position. 6 will come here as it is. So now we can see the GFG problem, rotate array by 1. Now we can run a program of a reverse array while we creating a functions. So in array, the static void reverse, then we can pass a array name, then we can left comma and right, then we can run a for while loop, left is less than equal to right, then we can initialize a variable name temp where we can put left value index value, then in the place of left index value we can replace with right index value, and now at the place of right index value we can put left index. So by using temp that we stored in temp variable, and now we can increase the left plus plus and right minus minus, then it will be reverse the array. Now let us take any array. So in Java we can take an array by using 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then we can, and now int k is equal to, it will be reversed 3 times. So then we can run a function, this reverse function we can call a reverse function. As I told you, we can pass a array, then we can pass a 0, then we can pass a k minus 1 times that I told you. Then we can simply copy and paste, Control C, Control V, Control V, and now we can replace run a loop remaining n minus 1 time, where we don't know what is n, so we can initialize the length of array is n. So the length of array is n, and we can run a loop 0 minus 1. Now we can simply print a array. Array will be, so first I can show you the array before int x. So I can show you the array before array reversible. So array before arrays dot to string
Dot toString is the array function where we can pass a array, and after reversal I can show you the array. Control C, and now here we can show you the array. Now run this code. You can check this. This will replace the array 1 time, 2 times, 3 times. I will show you. अब हम लोग कोड करके देखते हैं. हाँ, सबसे पहले हम लोग एरे को 1 रोटेट करना है. तो 1 रोटेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एरे के लास्ट इंडेक्स को फर्स्ट पे लाना है. तो हम लोग एरे के लास्ट इंडेक्स को स्टोर कर लेते हैं कोई भी वेरिएबल पे. तो एरे डॉट लेंथ -1. तो एरे के लास्ट इंडेक्स को स्टोर कर लिया. देन हम लोग एरे के एक शिफ्ट कर देंगे, जैसे कि हम लोग ने भी इससे पहले देखा. तो इन आई इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1, आई इज ग्रेटर देन 0, आई प्लस प्लस. देन इसके बाद हम लोग लेंथ की स्पेलिंग गलत हो गई. देन इसके बाद हम लोग एरे को एक एक स्वैप कर देंगे. तो देन आई की प्लेस पे हम लोग आई -1 रख देंगे. देन ये स्वैप हो जाएगा. देन इसके बाद लूप के बाहर निकलते हैं हम लोग लास्ट पोजीशन को एरे के फर्स्ट पोजीशन पे डाल देंगे, जो भी हमने लास्ट वेरिएबल पे स्टोर कर रखा है. देन इसके बाद हम लोग कंपाइलर रन करके देखते हैं. Oh, something is error wrong. Just I will check it. Array index out of 1. So what? Oh, the minus minus. Sorry. Then now it's correct. Now submit. Now this will submit successfully. So you can do GFG problem by using this. So thank you for today. If you have any doubt, then pin comment me. Like, share, and subscribe, and hit the bell icon.